Dr. Vichitrananda Swai, Associate Professor and Head Physics Department of Applied Psychology, Chetna College. So, the tax is concerned, we have to discuss about the project synopsis and how to write project and all these things. Before that, you should introduce yourself one by one. That will be helpful for me to interact with you. Please switch on your video and start introduce. Geeta Das, you can start your introduction in video. Sir, namaskar. Namaskar. Sir, mu counseling ro but mu aji class आपण को करे को चाहूतिली तनो आसिली किछ असुविधा नहीं थोड़ा नॉलेज पाइबी तेणु मु काउंसलिंग साइकोलॉजी नहीं छी सेकंड ईयर मोर एटा हला काउंसलिंग साइकोलॉजी माने कोड केते 24 सर 24 बोले कोच हां हां 21 रो 21 में एटा 26 ओके गुड थैंक यू अच्छा 46 हो जी हां ना 46 किछि कोड ही नहीं थैंक यू वी विल इंटरेक्ट लेटर ऑन सर मु करि पारबी तो क्लास किछि असुविधा नहीं तो हां हां क्लास करो थैंक यू सर पद्मश्री स्वाई हेलो सर नमस्कार कैन यू स्विच ऑन योर नमस्कार वीडियो स्विच ऑन है परिबो आज्ञा सर हां कौन स्पेशलाइजेशन अछि क्लिनिकल की काउंसलिंग की ओपी कौन अछि पद्मश्री पट्टी गले ओके सुकांत सर नमस्कार सर मोर अछि सर क्लिनिकल साइकोलॉजी अछि सर ओके तो आमे जति जण अच्छे वर्तमान स्टार्ट कर दबा सर ओके लेट अस स्टार्ट आमे आगुरु किछि प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस एक कथा सुनिचे आज्ञा सर आपण पत्र काम करूतु ना सेकंड ईयर रे सर फर्स्ट ईयर रे करूतु सेते बेला किछि फ्रेंड्स मान कहउतले कि करा जीवो प्रोजेक्ट करा जीवो इंटर्नशिप करा जीवो एंते सुनुतले सर फर्स्ट ईयर रे सुनुतले अन्य सीनियर्स मान कहउतले सुनुतिलो अच्छा सेकंड ईयर रे अछि बेली सुनुतिलो सेकंड ईयर अछि ओके इंटर्नशिप अछि बोली कहउतला अच्छा इंटर्नशिप भी अछि इंटर्नशिप रे होछि 15 कोड MPCE-15 15 25 35 स्पेशलाइजेशन अनुसार अलग अलग कोड ये 16 26 36 तेणु इंटर्नशिप तमर अभिलाष सर पढ़ेबे आमे प्रोजेक्ट कथा डिस्कशन करबा जेहेतु तमे सुनिच प्रोजेक्ट आ सिनॉप्सिस कथा सेथि पई मूल जिनिस हला समस्तंकर बिफोर सबमिटिंग एनी प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस MPCE-5 और 6 दीटा जो पेपर अछि स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च पेपर क्लियर हेतिबा दरकार पास करथिबा दरकार एटा मूल जिनिस आमे प्रोजेक्ट लेखिबा बा सिनॉप्सिस लेखिया पई जने गाइड रो आवश्यक हु कैन बी योर गाइड की गाइड करिवो हमकु जे आमे सिनॉप्सिस केमती लेखिबा कोन लेखा जीव तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस टुडे बट हु विल बी योर गाइड व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन दैट शुड नोन टू अस क्लियर सर गोटे डाउट अछि पचरिबी हां सर आपण जो कहले कि रिसर्च पेपर और स्टैटिस्टिक्स क्लियर हवा दरकार इंटर्नशिप पाई एटा इंटर्नशिप पाई नो प्रोजेक्ट पाई
प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस ପାଇଁ इंटर्नशिप ପାଇଁ अच्छा प्रोजेक्ट पाई किंतु प्रोजेक्ट जदि सर आमे अप्लाइड नहीं थु ताल तो प्रोजेक्ट नहीं हमरो बुझी पारलेनी अप्लाइड माने धर अप्लाइड साइकोलॉजी गोटे अछि पॉजिटिव साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन एमती नाही नथिबो तो किछि अछि सर 46 नंबर टा काउंसलिंग रो अछि अच्छा ना ना फर्स्ट ईयर जो एमपीसी 5 एंड 6 से पेपर क्लियर करथिबा दरकार हाँ माने जो माने करि नथिबे सपोज मु काउंसलिंग नै छी हां सेटा इवैल्यूएट हबोनी तो आमे मु करि परिबि ना करि परिबिनी सेकंड ईयर रो करि परिबो बट सबमिट हे परिबोनी अच्छा सबमिट हे परिबोनी अच्छा सबमिशन पई ए गाइडलाइन दरकार सो हु कैन बी योर गाइड जे एमफिल पीएचडी करिथिबे ता सहित मिनिमम 2 वर्षर टीचिंग एक्सपीरियंस थिबो एटा गोटे क्राइटेरिया नेक्स्ट होची मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी विथ मिनिमम 2 इयर्स फुल टाइम टीचिंग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड needs a teaching in psychology. Apart from that, you can choose your approved academic council. এই কোড पे जो माने अप्रूव्ड अछंती आरसी वेबसाइट बा इग्नो वेबसाइट रे देखिले सेठू मध्ये हमकु मिल पारि सेही मानक मध्यरु आमे जणकू कोन करि परिबा गाइड भाबे नै परिबा What is the role? Guide करो काम कौन? To provide you guidance regarding the selection of research topic. आमे research topic गोटे भाभी थिबा research विषय धारणा अछि तो what is research? Who can say what is research? Any idea? नहीं. First year सरी गलानी research विषय रे नहीं idea. सर रिसर्च होचे हमें गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट विषय रे हमें जानिया को चेष्टा करछे आ किछि कंक्लूजन बाहर करछे हमर So निजर it is a systematic and a scientific study to reach at a particular conclusion. It should be specified one. तेणु सर बेले बेले जोटा सोर्स हेई सारथिबो आमे ताको आउतरे रिसर्च करछु मींस आउतरे ता करू सेटा वेरी गुड हां ता देर भी हमें करि परबा काहे कि ता देर किछि रिसर्च गैप रहि जाय छि जोटा से छाडी जाय छि प्रीवियस रिसर्चर सर आमे ताको फुलफिल करिया को जाउ छि सेमिति भी हेबे to provide information about the related literature कोन जा सुकांत कहउथिले जे पूर्वरु करिचंती लोक तमे सपोज आमे गोटे टॉपिक नै गले इंपैक्ट ऑफ occupational stress on working and non working mothers right तेणु सीए करिचंती खोर्धा जिल्ला रे but you want to do this type of research in your area suppose you belongs to Barampur or somebody belongs to Koraput you want to do such type of research in your area that is the research gap that is the research gap so guide provide you information regarding related literature and encourage towards the original activity sabu bele you have to find an original one आउ नुआ के हम भीतर ऐसी जोड़ी हेलेनी टिके इंट्रोड्यूस करिवे की तृप्ति दास Yes, sir. Please introduce. Sir, my name is Tripti Das. I am studying MA Psychology. And my background is I am advocate. Very good. So, it has some relationship with psychology. Yes, sir. Okay, hi. Lopamudra. Yes, sir. Please introduce. Sir, my name is Lopamudra Ranbir. ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଆର ବର୍ଷ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି ସାଇକୋଲୋଜିରେ କୋଉଠୁ PCS ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ
ECS. ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ Oh, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। SCS. Okay, good. What is your ଆଜ୍ଞା specialization? Clinical or କ୍ଲିନିକାଲ organizational? ସାଇକୋଲୋଜି Clinical psychology. କ୍ଲିନିକାଲ Okay. Clinical. Okay. Anybody left for introduction? Gloria? Okay, I think she's not. Hello, Gloria? good afternoon, sir. Yeah. Yes, sir, good afternoon, Very, sir. very good afternoon. Yes, myself, Gloria Chana Niveditanak, and my specialization is clinical psychology. Mm, You belongs basically, to? I'm a housewife. Yes. Good. No issue. Psychology is important for all of us. It may be working or non-working. That's why Yes, we sir. today we are going to discuss about all these research work, right? Exactly. Project and synopsis. These are two different things. We'll discuss bit by bit. Synopsis means what is that? It is the just like the blueprint or the summary of the entire project work. What you want to do, right? I have to share a screen. Just a minute. Screen देखा ला कि is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା କଣ Just a ଏମିତିଆ minute. ଦେଖାଯାଉଛି? हाँ ମୁଁ ତାକୁ minimize କରୁଛି डिजाइनिंग ହେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଦେଖା ହେଲା କି is it visible now yes sir clearly yes sir yes sir so synopsis formulation so what is synopsis the project synopsis is nothing but an outline or blueprint of the project that should be undertaken by the learner or by you. Clear? To carry out any project, you will first choose a subject area based on your interest. As per your interest, where you are interested to work, you are interested to work in a particular clinic or special school or any hospital or industry anywhere so choose your area you can then finalize a topic in which you will be carrying out your project work after consultation with your guide ବୁଝିଯାଉଛି ଆମେ ଆଗେ yes ଆମେ ଆଗେ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏରିଆକୁ ବାଛିବା then we will talk this about with our guide କା ସହିତ କଥା ହେବା guide ଙ୍କ ସହିତ କଥା it is necessary that you will review various research studies
या पूर्व कौन सब रिसर्च हेइची आमे जो विषय रे करबा को जाउचे मु जेमति कहली गोटे ऑक्युपेशनल स्ट्रेस आ पूर्व रिसर्चर के करिसेंती कि कौन से करिसेंती वी हैव टू सर्च regarding this information on our selected topic. Where we have to search? We have to search from various books, journals, or information available in the internet. And basically, the topic on which we have selected or chosen in consultation with our guide, that should be very specific, focused on that. It should be completed within time limit. That should be a time limit. Then the basic objective of this project should be specific, measurable, achievable, realistic, and also time bound. And the synopsis before project, we have to write a synopsis, and the synopsis must be typed on A4 size paper in Times New Roman, and the font size of that should be 12, and line spacing or gap should be 1.5, and the maximum pages for synopsis is 15 to 20 pages. The information included in the synopsis should not be plagiarized, should not be copied, should not be borrowed either from any guide, either from earlier learner, or from your friend. A slide रे जेती कथा अछि हमें बुझी पारले कि नहीं? इज देयर एनी डाउट? कारण एटा होछि प्रैक्टिकल जिंस, रिसर्च जिंस, एटा थ्योरी किछि नुहे। जोठी न बुझी परिबा हमें पचारिबा, यू कैन आस्क एट योर कन्वीनिएंट लैंग्वेज। समस्ते बुझिले? यस और नो? हां सर। ठीक है ओके, आगु को जिबा। यस ओके, सिनॉप्सिस हमें लिखिले, हमें तब कौन करिबा? सबमिट करिया, ताकू पाखरे रखिबा। नो, एटा सबमिट हबो कोठी? रीजनल सेंटर। काहे कि फॉर इवैल्यूएशन आम गाइड मिसिकी जो जिनिसटा कले सेटा whether it is approved or not approved. In case of synopsis being not approved, comments, suggestion for reformatting the synopsis will be given by the synopsis evaluator. Sometimes what happen, केते को comments आसे जे टाइटल ठीक लिखाइनी, लिटरेचर ठीक भाव लिखाइनी, various comments comes by the evaluator. In that case, we have to modify and do our work with revised synopsis. When it becomes not approved, then again we have to submit a fresh proposal. बुझियला? So project synopsis is a proposal for writing, conducting any project. बुझी पारिले? आमे जाइने सिनॉप्सिस केमिति लिखिबा, कोन तार फॉर्मेट से जाके आमे जाई। सर जस्ट खाली सर गोटे टिके डाउट लागन दी अपन टिके पूर्व कहउतले कि प्रोजेक्ट एंड सिनॉप्सिस ये दीटा जको माने डिफरेंट अछि। हां आज्ञा सर, माने एटा होछि स्टेप 1 के सिनॉप्सिस लिखिले अप्रूव होला परे हम प्रोजेक्ट को दिबा। एटा होछि यार प्रोजेक्ट हला। आउ किछि डाउट भितर सेंति संदेहकार अछि कि?
नहीं Sir, I have a yes clinical psychology, not project. uh, So I have not required enough synopsis submission. yes, every student is required. It may be clinical psychology, it may be counseling psychology, it may be industrial or OB psychology. For every learner, it is required to submit a synopsis. It may be MPCE-16 or MPCE-26 or MPCE-36. বুঝিপারলে? Okay, sir. 16, 14, 36. Everybody have the No, required. 16, 26, 36. 16 है ला clinical, 26 है ला counseling, 36 है ला OB. Okay, sir. Sir, what is the deadline, sir? Deadline will naturally for July cycle it is within 31st October, and for January it is 30th April. So you have to come contact with your regional center where you will get detailed information about this. Okay, sir. Thank you. Okay. Preparing project synopsis. It may be your clinical, it may be your counseling, it may be your industrial or any other. The format will be same. The format will be as per APA. Do you know about APA? American Psychological Association. All these things should be formulated or abide by the law of APA format. First one is title page. पिला माने बा लर्नर माने यूजुअली कोन करंती कि अछंती कि ओडिया बुझी पर नांती? इज देयर एनी लर्नर? कारण मु अनेक समय ओडिया भी कहूची बुझी कार असुविधा होची कि देन आई विल चेंज माय लैंग्वेज. देशर ओडिया भी मजा नहीं के जे थिबे बुझी पर नथबे केही कहू ना दे केही नाचे कहले कोन त आपण ओडिया कोन psychologist कहउचंती when there is a stimulus and no response there is extinction as stated by Pavlov in the classical condition. So I understood that there is a extinction process. So title page रे हमें कोन लिखिबा? What should be in the title page? आमे बहुत समय रे आम ना गाँ घर द्वार ताधर आ जमी बाड़ी जदी जगह भी थांता ताकू भी लिखि दउतले. It should not be. The first page of the synopsis should the title of the project. जो टाइटल टा हमें फाइनल करिचे आमर इंटरेस्ट एरिया को धरी with consultation with our guide. कारण गाइड का सिग्नेचर दरकार ना, से देखिथिबा दरकार. हां से ताको ना रहिबो, तमर एनरोलमेंट नंबर रहिबो, तम ना रहिबो, को स्टडी सेंटर रहिबो, रीजनल सेंटर रहिबो एंड गाइड कर नेम. एत्ती की जिनिस मिनिमम रहिबो कोथरे टाइटल पेज रे बा फर्स्ट पेज. एटा समस्त बुझि पाले? आगे सर. Introduction ने कौन लिखिबा? Just like your practical. As per the title, suppose I am talking about the impact of occupational stress on working and not working mothers in Khordha district, for example. So you have to introduce your title. Title ले जो variables रहिला, stress, working, non-working, you have to write about all these things very brief. मु आगुर कहि देछि ये केते पेज भीतर रहबा सिनॉप्सिस टा 15 रु 20 पेज. पिला लेखि के आनिबे 100 पेज. काहे कि ना मोर से चिन्हा थिले ददा हेबे, से जानि चंती साइकोलॉजी विषय रे आ से एटा देले नै कि सबमिट कर देले. नो, इट शुड नॉट बी. आमे जा बुझिचे गाइडलाइन जा से अनुसार वी हैव टू सबमिट. अदरवाइज कोन हबो? नॉट अप्रूव होई गले हमको बारंबार सबमिट करिया को पड़ुथि. बुझियला?
So be careful about all these things. जेतेबेले आमे गोटे टाइटल भी नौचे सिनॉप्सिस रो हमर एपीएम अनुसारे एपीए गाइडलाइन अनुसारे it should be confined within 12 words 12टी शब्द मध्य रे रहइबो आमेटा मन इच्छा एते खंडे 4-5 लाइन लिखि देउचे it's not clear. आज्ञा. Then review of literature. Review of literature. Review of literature कौन इन सुकांत कहउथिले ए earlier studies कौन है जे हमने जो नेले suppose गोटे impact of occupational stress on working or non working mothers. So या विषय रे पूर्वरु कौन सब स्टडी है कोठी एटा मिलिबो पांदकान रे ना किए दपो साई पडिसे ना it's कोठी by the earlier research published in the form of books journal articles research article हमको सब देखिया को पड़ियो एमटे स्टडी सब कोठी हेच it helps in generating ideas and developing significant question for the research. In this way you will cite different studies जे राम बाबू करथिले या हरि करथिले या तेनु से या छाडिथिले we have to justify this. These are the literature. You have to search various research articles, journals, books, etc. कोठु पाइबा लिटरेचर बुझेला आमे गोटे टॉपिक भाबिले ताकू गाइड का सहित कंसल्ट करी फाइनल करले कोठु पाइबा रिसर्च बुक रु मैगजीन रु जर्नल रु आर्टिकल रु एड सब पाइबा ता विषय रे कोन आगरो स्टडी हिच. Then review of related studies should primarily focus केमिति आमे रखिबा रिव्यू ऑफ लिटरेचर मन इच्छा लिखिला बनी केमिति लिखिबा द ऑथर जे करिसंती ताकर ना रहइबो ब्रैकेट रे ईयर रहइबो ताकर ऑब्जेक्टिव कोन थिला से जो महाशय करिसंती पूर्वरु ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी सैंपल साइज कोन थिला टूल कोन यूज करथिले रिजल्ट्स फाइंडिंग्स कोन से पाइ बेले बेले पिला डी फर्दर लिखि देथिबे कोठी स्टडी हेछि आमे जानि परबु किंतु तार ब्रीफिंग करिया पड़िबो ऑथर को ना तांकर ईयर तांकर ऑब्जेक्टिव कोन थिला सैंपल कोन नैथिले टूल कोन यूज करथिले देन व्हाट आर द फाइंड. सो दिस शुड नॉट बी कॉपीड फ्रॉम वर्बाटिज्म हमको मिलुनी आमे खोजिने ए सी कहूला बा सांगोटा यही गोटा ना मो ना निज ना पकई दे कि ब्रैकेट रे ईयर पकई देले हबो ना नो वर्बाटिज्म मुहरे जणे कहले सेटा हे परउनी यू हैव टू फाइंड इट फ्रॉम वेरियस बुक्स जर्नल्स आर्टिकल्स कारण जो बुक्स जर्नल आर्टिकल हमें जहा नबा सेटा पुनी परवर्ती समय रे कोथरे लेखाबो रेफरेंस रे लेखाबो फॉर्मेटटा कहइबो. द रिव्यू ऑफ लिटरेचर शुड बी रिटन इन ए पर्टिकुलर फ्लो and organized manner, not in bullet points. Bullet point re ye roibo nahi. The purpose is here that you are discussing the related studies, not just mentioning this, because the basic purpose kon review of literature lekhiba uddesya hela ame jo topic ta neiche sei related पूर्वरु कोन सब स्टडीज हेछि ताकू ही lekhiba हमर basic object, not जे खाली कॉपी करी उतार ए स्लाइड टा में बुझी पाइले. इज देयर एनी डाउट्स प्लीज आस्क. सर जो आप कहले माने बुलेट पॉइंट्स गुडा दबानी हमें से जगह कोन करबो माने पैराग्राफ टाइप लिखया पड़िबो ना कहीं एटा पैराग्राफ रे लिखाबो गुड पैराग्राफ रे लिखाबो फास्ट आसीबो ऑथर का ना तापर ईयर टा विदिन ब्रैकेट रे रहबो तापर ऑब्जेक्टिव ए रही कि ताको सैंपल टूल चाहे यूज करथले फाइंडिंग्स जा पाइ हला. ओके आउ सेमिति कारो इज देयर एनी डाउट्स कारण एटा भलो कि बुझिले हमर नेक्स्ट क्लास मोर जो दिन अछि हमें गोटा नेखा रिसर्च प्रपोजल लिखि के आनिबा देन आई विल डिस्कस ऑन दैट हला कि एटा खाली आ सुनी देई कि रही गले घरे हबो ई पाठरे किछि सेमिति मिलिबोनी कारण वी हैव टू डू समथिंग आगु को जाई के हमर रिसर्च प्रपोजल सबमिट करिवार अछि
आमे जदि प्रपोजल खंडे खंडे तैयारी करके आसीथिबा नेक्स्ट क्लास रे विल डिस्कस अबाउट दैट तादरे कोन आ हे परिबो विल डिस्कस ठीक अछि आज्ञा सर rational कोन rational of the study why you have taken this study rational रो काम हला काहे कि एई विषय नेले एते स्टडी जे हेची एते विषय अछि तमे एई विषय को काहे कि नेलो तारा जस्टिफिकेशन कोन ने लिटरेचर ही मिलियो रिलेटेड लिटरेचर पूर्व चैप्टर रे जो थिला रिव्यू ऑफ लिटरेचर सेटा ही मिलियो जे ऑक्युपेशनल स्ट्रेस विषय रे हेची किंतु एई जगह रे मु जो एरिया रे काम करछि जोठी अछि सेठी occupational stress रे there is number of studies has been done but in my area it is not done जदी हेची मु जो टूल नबा को चाहूची से टूल को नै की हेई मु जेति की सैंपल नबा को चाहूची से सैंपल नै की हे that is the rational research gap you have to make the rationale for carrying out the particular project is explained here it is focus on why do you want to do this study taking these variables methodology हला कोन केमिति करबा सेटा हला काहे कि नेलो काहे कि कलो एटा हला केमिति करबा ता पई कोन दरकार जस्ट लाइक योर प्रैक्टिकम samples tools all these things are required methodology includes research problem or objectives hypothesis operational definitions sample research design test or tool for data collection and analysis step and if we go to the objectives we'll discuss one by one what is objective or problem objective should be specified हमें कहबा मु गोटे कहली जे impact of occupational stress among working and non working women in Khorda रे तो लक्ष लक्ष लोक एमती बाहरिबे कोठु नब particular area that name should be mentioned in your objectives clear that is the objective what you exactly wants to study and hypothesis always be connected to the objective it is the provisional supposition or pre-result of a particular synopsis or project so usually what happens people always takes null hypothesis जे वर्किंग वुमेन माने बेसी स्ट्रेस रे रहिबे नाही कि नॉन वर्किंग वुमेन माने फॉर एग्जांपल जा तो स्ट्रेस रे रहिबे नाही तापरे हमें कोन करले ताकू रिजेक्ट कर देले अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नहीं करले null means no significance but nowadays you have to take the alternate one there will be a significant difference in the stress level of both working and non-working women clear then you have to test your risk आगे ना लिखिगी तापर हेलानी आगे ना टा कहीं नबा टेक पॉजिटिव so hypothesis is needed to a proper format and it is always connected with your objectives objective जेतिटा नहीं थवा ता अनुसार हाइपोथेसिस सेतिटा थिबा क्लियर हां आगे सर नेक्स्ट बुझिबा ताले नेक्स्ट स्लाइड देखा वाला की आगे operational definition yes what is operational definition सर सैंपल देखो सैंपल रिसर्च डिजाइन शो करो ऊपर ये सर ये ऑपरेशनल ये सब पाइले तो हां सम operational definition कोन definition means it should be defined by somebody else
And here the operational definition means the way you want to define the particular variables. Who are working, who are non-working, what do you mean by occupational stress? All these things, that is the operational definition. Then sample. Who can say what is sample and what is population and what is the relationship between sample and population? पॉपुलेशन होची गोटे एरिया रो केते लोक प्रेजेंट For example, माने सपोज खोर्धा जिला नो सेटा population ना sample? सैंपल होची गोटे केस स्टडी मे बी तो गोटे हमें नो एग्जांपल हम क्लियर कर दोची। हां तमे को कॉलेज रे पढुतलो? बीजेपी कॉलेज सर। बीजेपी कॉलेज टा होची पॉपुलेशन, तमरा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जेते पिला अछंती सैंपल, साइकोलॉजी पिला जेते अछंती पॉपुलेशन, तमरा फर्स्ट ईयर पिला को नेला सीएला सैंपल। फर्स्ट ईयर पिला हले पॉपुलेशन, तमरा फर्स्ट ईयर पिला जो जोड़िए पिला नेला भीमसेन आ रमावती बा रामदेवी सी हले सैंपल। क्लियर? आ गया। So sample is nothing, it is the subset of the population, it is the part of the population, and population represents the entire characteristics of a particular sample. The size and the nature of the sample will depend upon the topic selected. जने कहिबो जो माने जाइचंती देखिचंती चेतना रे प्रैक्टिकल करथले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी चिल्ड्रन देखचंती कि नहीं, कहबे आमे 200 लोक को नेइथिलु सारे सैंपल नै कि रिसर्च वर्क करलु। इज इट पॉसिबल? नो सर। गोटिए पिला को नै केस स्टडी करले आमे एना सेहिति पे कुहाइची इट इज सैंपल साइज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक व्हाट यू हैव सिलेक्टेड। कारण मु करिथिली 12 जन इंटेलेक्चुअल डिसेबल चिल्ड्रन को नै कि मोर पीएचडी थीसिस करथिली ऑन रिगार्डिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन। सेठी हमें कहबा 200 अन्य माने मो सांग माने भी रिसर्च वर्क करथिले, से 200 से कोन करथिले सर्वे मेथड करले टीचर माने कर एटीट्यूड्स कोन टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन। ते खोर्धा जिल्ला रे पसी गले 100 टीचर कर एटीट्यूड गोटे क्वेश्चनियर दे देले से फिल अप करि देले। एठी किंतु से जिंस होई परिबो। सो इट शुड बी, इट्स always depends upon the topic what you have selected. topic के अनुसार sample size यानी बुझियला? Okay. While providing details about the nature and the size of the sample, also mention the sampling technique. हम सब विभिन्न sampling technique पढ़जे, काको randomly select करजे, काको purposefully मध्य करूचे। That's why it is named as randomization and purposive sample technique. Depends upon the topic and the nature of the sample in your research work. So research design is also needs to be specified. Bottomane you should be clear why it is mentioned that those who are not clear MPCE-05 and 06 research and statistics, they are not eligible for submission of this project proposal. Clear? कारण ये तो तार से जो पिला जो लर्नर दब से तो जानी न थियो सैंपलिंग कोन, रैंडमाइजेशन कोन, रिसर्च डिजाइन कोन, से प्रपोजल केमिति लिखिबो? कारण सेति पे कुहाइची they should clear these two papers. बुझिले? आ गया। तेणु सैंपल कोन बुझले, पॉपुलेशन कोन बुझले ना बुझले? हां हां अच्छा सर, पॉपुलेशन माने हमर गोटे बिग नंबर ऑफ पीपल। यस यस। तापर तार स्मॉल पार्ट होची हमर सैंपल। एमएपीसी सेकंड ईयर जेते पिला अछंती से माने हेले पॉपुलेशन। ताको भितरु मु 4-5 जन को नेली बा 10 जन को नेली, दे आर द सैंपल। यस सैंपल को केमिति बाचिली? सपोज रैंडमली बाचिली 2 नंबर, 5 नंबर, 17 नंबर, इट डिपेंड्स अपॉन। बुझले? हां। जदि आमे गोटे स्पेसिफाइड कर दबा, क्राइटेरिया कर दबा नाही जो मानकर बयस 25 रु 30 भीतर थिबो मु से मान को नेबी, से मितिया जेतटा पिला नेबी
नहीं मु खाली जो माने लेडीज अछंती सेमान को नेबी इट इज जेंडर इज स्पेसिफाइड दैट इज अनदर वेरिएबल बुझी होची टिके टिके बुझी होची नहीं की नहीं सर सब बुझी बुझी हां एका दिन सब बुझिले भी असुविधा then tools or test or tool for data collection are to be selected on the objective of the research आमे ए जो टूल सिलेक्शन सपोज आमे आईक्यू टेस्ट करबा पिलार को टूल नबा सपोज रावेन्स कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स आरसीपीएम नबा आमे कहबा 16 पीएफ नैचे विषय रे लिखि जाइलेनी टूल रे किंतु पिलार टॉपिक रे नैचे आईक्यू केते जानिया पई आमे रिसर्च करछ इज इट रेलेवेंट नो इट इज नॉट हमर टॉपिक अनुसार हमको टूल नबा को पड़िबो टूल भी कोन नबा where it can be determined it is determined in the review of literature past researcher what they have used different tools on the basis of that we have to select our tool clear tool le कोन लिखिबा the tool for data collection will include detail about the test suppose हमें लिखले Raven's color progressive matrices. It is a standardized tool for it is a non-verbal intelligence test for measuring the IQ level of children 5 to 12 and it consists of 3 sets and each set carries 12 number of items and total number of items is 36 on the basis of correct responses performed by the child in relation to the chronological age, IQ is determined. So all these things should be clearly mentioned in the tool. Who developed it? Jesse Raven developed it in the year 1911. So all these things you have to write. Suppose we are doing a research on stress. Suppose we have used the state anxiety inventory. So we have to write about all these things about style, not on any other intelligent test. That's why you should be very careful what is your topic and what are the tool used in the literature. Literature कौन सब past researcher आमे वर्तमान जहाँ research work करिबा हमर next generation सी हमठु नेबे literature सो आमे ताको पई रेफरेंस बुझी होची जेमति आमे आम पूर्वरु देखुचे कोन सब पास्ट रिसर्चर हेछि ताको लिटरेचर नउचे आमे जदि नुवा किछि करले that becomes a reference idea so it should be reliability validity आमे जो टूल नबा तार reliability validity थिबो that must be standardized tools मनु को ओटा कागज रे लेखिकी ताकू आमे यूज करी कि तार रिजल्ट आमे वेरीफाई कर परिबा नाही जो गोडा को स्टैंडर्डाइज है कि अछि आमे दैट टूल वी कैन टेक टूल ले का विषय लिखिबा बहुत पिला लर्नर्स दे राइट अबाउट द एंटायर टॉपिक ऑन द टूल कि से टूल टेस्ट विषय लिखाइ छै को टूल यूज करछ आमे ये विषय रे आगुर की करिथिला जोटा लिटरेचर खावा कथा सेटा एठी भर्ती कर दी इट शुड नॉट सो बी क्लियर अबाउट ऑल दिस थिंग्स देन डाटा एनालिसिस आमे सैंपल नै गले टूल नै गले हाउ टू एडमिनिस्टर द टूल ऑन सैंपल दैट इज कॉल्ड डाटा एनालिसिस डाटा एनालिसिस इज a technique used to analyze the data obtained with the help of test tool specified tool for data analysis should be mentioned appropriate data analysis technique needs to be used if the study needs intervention based suppose I have conducted a research work that is a case study and depends upon much more intervention while I am dealing with children with ID and for their problem behavior management. So some studies needs interventions. If you have mentioned intervention, then
What is the strategy? The strategy you have to mention. Kete gap re tanku reinforcement diya gala. What is the duration and the number of session you have taken? So that is the intervention. In the case study, particularly, the intervention strategy is required. बुझेला? Differences. टिके टिके बुझेला? Then reference. Reference should be as per APA style. APA के American Psychological Association. References have to written in that format and it should be alphabetically listed. आमे रेफरेंस ए तापरे सी तापरे ई तापरे पुनी ए नो इट शुड बी रिटन इन अल्फाबेटिकली सर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए अमेरिकन साइकोलॉजी यस सर हां एटा इंटरनेट रे मिलुची तार गाइडलाइन देछि केमिति हमें रिसर्च प्रपोजल भी लिखवा कोटा इटैलिक हबो कोटा बोल्ड हबो एवरीथिंग इज रिटन एटी रेफरेंस जो लिखिबा सपोज एटी अछि ताको ना होची ए एनास्थेसी हमें कोन करबा एनास्थेसी कॉमा ए डॉट तापरे डॉट ब्रैकेट रे ईयर तापरे देखो ताको बहिना साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ये बहिना टाको हमें इटैलिक टे बंके जाई इटैलिक रे देन कोट पब्लिश हेतला लंडन मैकमिलन पब्लिशर लिमिटेड ता माने लोक ना रहइबो फर्स्ट सरनेम तापर नेम तापर ईयर तापर तांग बहिना तापर प्लेस तापर पब्लिश आर्टिकल लो जदी आनिले सेमति सरनेम आगो ना तापर ईयर तापर तांकर को पार्ट रु आनिले आमे लेखा अछि ब्रिंगिंग कॉर्पोरेट कल्चर टू द बॉटम लाइन एटा ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक वॉल्यूम 13 तांकर पेजेस हला 22 रु 24 जति कोनोसी बुक चैप्टर रु हमें आनिबा सपोज ताका ना हला एडब्ल्यू खान खान.a.w ब्रैकेट रे तांकर ईयर थिबो 2005 डिस्टेंस एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट ऑल दिस थिंग्स जति केते गुडिए लोक ना मिसी की अछि लिटरेचर विषय त्या डकार हेडी ईटीएल लिखा है एटाल माने हिज एसोसिएट सेठी लिखा है जति वेबसाइट रु आनिले ताको केमति रिट्राइव करबा तेनो you have to visit www.apa American Psychological Association.org organization for information regarding citation from different sources and further clarification एगुडा सब आमर आवश्यक का पाई प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस पाई तेनु आमे एडो सब पढिबा ए स्लाइड रो किछि आवश्यकता नहीं नेक्स्ट एटा मु फास्ट रु कहि यू आर रिक्वायर्ड टू complete and pass yes के कोन कहउचंत कि you are required to complete and pass MPC 5 and 6 in first year for submission of project synopsis, MPC 16 for clinical, MPC 26 for counseling and MPC 36 for OB. You need to submit a self-attested photocopy of a grade card mentioning passing of MPC 5 and MPC 6 courses. A synopsis सहित हमको कौन देबाक पड़िबो grade card that must show that you have passed MPC 5 and 6.
In the absence of this, the project synopsis will not be evaluated. ଏତିକି କଥା ବୁଝିଲେନି? सर ଟିକେ ରିପିଟ୍ କରି ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇ ଯାଇଥିଲି ସାର୍ 1 minute ପ୍ଲିଜ। ନାଇଁ ମୋର ତ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇନି, ମୁଁ ସିଲଟ ଟେକିକି ଧରିଛି ବା ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟୁ ସବମିଟ ସିନopsis ଏଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। ठीक है सर ମୁଁ ହେଇଥିଲି ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଥିଲି ସେଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ କରି ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ Sir, if not completed ମାନେ MPC, sir, if not completed the subject MPC 5 and 6, then next year they will then submit you cannot submit this project year. synopsis. Yeah, This year not because this submit, is but next year can after try that. again. Yeah, yes, after that you can submit because this is the minimum eligibility criteria for submission of any synopsis. It may be in clinical counseling or OB. Okay, sir. ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ read the handbook on project thoroughly and decide on the interest area in the concerned specialization course MPC 16, 26, 30. एउटा handbook ମିଳିଥିବ, you have to go through. ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଟା ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେଇଟା କ୍ଲିୟର ହଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉଟା କାଉନସିଲିଂ ମାନେ ସରି ଆପଣ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ସବମିଶନ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କି ସିନopsis, ସେଇଟା ଯୋଉମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିବେ, ଯୋଉମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କରିବେ ଆପ୍ଲାଇଡ ପଜିଟିଭ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଏକ୍ସାମଟା ଦେବେ। ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆର କାହିଁକି ନା ମାନେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସାର୍ ମୋର ସେଇଟା ଦେଖଉନି ଜମାରୁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆପ୍ଲାଇଡ ପଜିଟିଭ ସାଇକୋଲୋଜି ନେଇଛି, ତେଣୁ ମତେ ସାର୍ ଲାଗୁଛି ମତେ ବୋଧେ ଏଇଟା ସବମିଟ କରିବାକୁ ପଡିବନି। କଥା ହବ ଯାଇକି ଇଗ୍ନୋର ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟର। ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ଅଲଗା, ଏଇଟା ଅଲଗା ନା? এইটা ଅଲଗା, ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ଅଲଗା। ଏଇଟା ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ହଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ you ଟା। have to ମୁଁ ବୁଝିଲି ସାର୍। visit any clinical center, institution, you have to work for 8 hours per day, then submit a report on that, what work you have done and what are the activities is organizing in that institution. That is the internship, but it is a research work, that is not a research work. ବୁଝିହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢିବା। ତାପର କାମ ହଉଛି ସିଲେକ୍ଟ ଅଫ ଦ ଗାଇଡ। ଗାଇଡ କଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଥିବା କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି। ବେଷ୍ଟ ହଉଛି ଆପ୍ରୁଭଡ, ଯୋଉମାନେ ଏକାଡେମିକ କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି ନେଇଯିବା, ନହେଲେ ପିଜି ପିଏଚଡି ଏମଫିଲ କରିଥିବେ, 2 ଇୟର୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଟିଚିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ, ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାୟୋଡାଟା ଗୁନ୍ଥିକି ଦେବାକୁ ପଡିବ। Preparation of synopsis as per the format in the given handbook. Handbook जो अच्छी तादरे format टी देइची से अनुसार करिया पड़िबो। Where to submit? I have already told you. You have to submit at your regional center. Starting of data collection only after the synopsis is approved. पिला व्यस्त हो जान सारे हमरो synopsis देइछु, data collection भी सारलण कि synopsis approve हैला कि नहीं? नहीं। So sorry, it should be approved first. प्रथमे एटा अप्रूव हेले तापरे जाई कि कोन हबो, आमे डाटा कलेक्शन पई कि जिबा। Following ethical guideline while doing data collection analysis, that is the research guideline. Writing of research project as per the format in the handbook. Then filling of term and examination form and paying exam fee for the project viva and all these things. These are the administrative guidelines. Then what is the next? So these are the all things what we have to do in our project synopsis. आमे क्लियर हेले
टाइटल पेज रे कोन रहइबो आगे सर केते पेज रे लिखिबा आउ को पेपर रे लिखिबा A4 साइज पेपर रे लिखिबा within 15 to 20 pages भीतर लिखिबा आउ लाइन स्पेसिंग 1.5 रहइबो फॉन्ट साइज मिनिमम 12 रहइबो क्लियर आज्ञा सर जेते बेले हमरो कोन हबो ना सिनॉप्सिस टा अप्रूव्ड हेइ जिवो तापर कोन करिवा who can say सर प्रोजेक्ट करवा project करिवा good once your project synopsis is approved you can start with your data collection after data collection then you have to analyze the data and you can start working on your project dissertation and one thing is most important see you have to contact your guide regularly to carrying out your project work and writing the project copy. Then the size of dissertation or project depends upon your nature of work. However, it is desirable that dissertation should be around 100 pages. केते पेज भितर हबा कथा 100 हमरा चिन्हा जणा अछि हम ओटा मोटा पोथी काटू पाई जाई छे ताकू उतारी ता ना काटी हम ना थोई 300 पेज सेटा कोन हबो कैंसिल रिजेक्ट तेणु खुशी है कि आम घर को आसवा तेणु ये काम आम करवा नहीं आमर प्रोजेक्ट मैक्सिमम केते पेज भीतर हम 100 पेज A report should be in A4 size paper and in a bound form ताकू केमिति आमे रखिबा बांधी रखिबा कोथरे पेपर बुक बाइंडिंग हबो स्पाइरल नुह the language to be followed for the project should be English आमे कहबा हिंदी रे दबा प्रोजेक्ट प्रपोजल ना हे परिबन एटा कोथरे रहइबो इंग्लिश डिसर्टेशन बा फाइनल जो प्रोजेक्ट करिबा तार भी फॉर्मेट कोन ना टाइटल पेज सेम जिंस टाइटल पेज रहइबो फर्स्ट पेज रे हमर टॉपिक ना रहइला नेम ऑफ द लर्नर माने योर नेम योर एनरोलमेंट नंबर रीजनल सेंटर नेम ऑफ द गाइड all these things must be written in the front page certificate of the originality and completion this is the format certificate given in appendix 9 and 10 appendix 9 ଆଉ 10 ଯଦି थिबो पाखरे देखि जानि परिबो सेही फॉर्मेट टाकू फिल अप हबो आज ए सर्टिफिकेट पेज गोटा होउछ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी जोठी दी जनकर सिग्नेचर रहइबो लर्नर करो आउ गाइड करो डेजिग्नेशन नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑल दिस थिंग्स आउ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन गाइड लेखि की देबे जे दिस इज टू सर्टिफाई दैट ए लर्नर एनरोलमेंट नंबर या एमपीसी 16 की 26 की 36 टाइटल या अंडर माय गाइडेंस हैज कंप्लीट ऑल दिस थिंग्स एटा निजे लेखि की दस्खत माइले हबो नाही एटा की करिवे गाइड फर्स्ट पेज गला ये अपेंडिक्स दिटा लागिला तापरे कोन होउची ना एक्नॉलेजमेंट रे कोन लिखा जाए where you have to mention to whom you are thankful in your research work का को तमे गाइड की धन्यवाद देला तमरो where you have collected the sample you are also thankful all these things this is the type of formality then table of content then abstract
abstract means brief summary of your research work. तमे प्रोजेक्ट ता एंटायर प्रोजेक्ट हला 100 पेजेस भितरे आ abstract ता रहइबो 250 रु 300 शब्द भितरे. You should be very clear about all these things. You should note down your abstract केते वर्ड भितर रहइबा उचित 250 रु 300 शब्द. तापरे आसी जीव योर इंट्रोडक्शन ने कौन करिबा. This section introduce the topic by the learner and it can gives a brief description of the variables also. आमे सिनॉप्सिस रे इंट्रोडक्शन लिखितले किंतु सेठी बहुत कम लिखितले कारण सेठी एंटायर कामटा को we have wind up it within 15 to 20 pages. 15 रु 20 पेज भितर सारिते. एठी किंतु आउ टिके आमे ताको अधिक लिखिया पड़िबो. Variables, what is variables? Who can say what is independent variable, what is dependent variables? Anybody has any idea? Okay. Nobody has no idea. Everybody has a zero. Idea कार नहीं. मन्ने पड़नी. हे मन्ने पड़नी भी आमा साइकोलॉजी पाठ. Remembering and forgetting just two opposite side of the same coin. Don't worry. So independent variables, that is nothing. That is the cause of each and every experiment or every test or every research study. And dependent variable are the results. Suppose we have taken a role of reinforcement on behavior modification of children with IT. So the role of reinforcement is the independent variable, and how much the behavior is modified, that is the results. And so many other variables are there, just like in experiment, just like the number of items, the time limit. These are remain constant. आमे एग्जाम जेतेबेले करूचे सपोज आमे एमपीसी सेकंड ईयर पिलांकर टेस्ट करिया कोन करिया 10 टा पिलां को 10 प्रकार प्रश्न दउचे. नो, समस्त को समान प्रश्न दउचे. आई क्वेश्चन नंबर भी सेम ना, तार ड्यूरेशन भी सेम बा टाइम लिमिट भी सेम. तापर आमे जानूची किए भलो लिखिची किए लिखि. yes or no, these are named as constant or controlled variable. So these are the all these things should be written very briefly in your introduction part. तापरे आमे आसीबा रिव्यू ऑफ लिटरेचर. सेठी रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमको being a master degree learner, you have to write minimum 13 to 15 literature in your project work. Please note it down. Minimum 15 टा 12 रु 15 टा थिबा दरकार. 3-4 टा हमको दबाव पड़िबो कोथेरे सिनॉप्सिस रे. एठी आउ टिके अधिक कलेक्शन करबो पड़िबो. So review of literature is the collective body of work done by the earlier researcher. What I have already told you, you can find it from books, journals, all these things. Then in the same format also, like your synopsis, because synopsis is the proposal and it is the main one. Which one? Project. After approval, you have to write. And all this literature should be recent studies. 1901 मसिया कौन स्टडी होइतला जेजंक अमल रे सेइटा को लिखले हबन. रिसेंट 10 years भितरे, past 10 years भितरे कौन हेची, you have to means. बुझिले? आगे सर. बर्तमान केते लर्नर में अच्छे? 10 हो गए सर. 10. आगे. Okay. Oh.
कार किछि डाउट्स अछि कि ए भितरे हम गोटे पटे जाउची कार किछि डाउट्स अछि कि न मु खाली गोटे पटे कहि चलछि भागवत सुनला बेले बसी शुणियो किछि आउटपुट 0 any queries till now नो सर सर मते खाली गोटे जिनस आउ थरे टिके एग्जांपल देकी कहि देबे कि बुझे देबे कोटा ताई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल रो गोटे एग्जांपल देकी हो प्रैक्टिकल करथिले आहुरी पुराना प्रैक्टिकल +2 लेवल ले करथिले स्टडी ऑफ मेमोरी फॉर मीनिंगफुल वर्ड्स एंड नॉनसेंस सिलेबल्स मीनिंगफुल वर्ड तुमको दिया गला सुकांत को दिया गला नॉनसेंस सिलेबल्स गुड को बेसी बने रहनी बिकॉज it has no meaning, it cannot be pronounced, okay, it has no dictionary meaning, that's why it is less remaining sei jinisota jedi ribe seti pai ye independent variable mane ame jedi reverse kar daba sei jaha ko nonsense syllables di aichi seita tumku di aigale tomar bi retention rate kami ji so these are the independent means kept free to be manipulated by the experiment and the result जनकर 80% हैला आ जनकर 60% हैला एटा डिपेंड करूची कहा पई एई प्रश्न पई सपोज आमे इग्नोर परीक्षा हैला टर्म एंड एग्जामिनेशन जनकु सहजिया प्रश्न दबा आ जनकु कष्टिया दबा जाकु सहजिया ऑटोमेटिकली ता स्कोर कोन रहइबो अधिक रहइबो हां सेटा हैला इंडिपेंडेंट वेरिएबल ए जो रिजल्ट अधिक कम हैला काहे के हैला इट डिपेंड्स का ऊपर से जो नेचर ऑफ मटेरियल ऊपर नेचर ऑफ क्वेश्चन ऊपर सेटा हैला इंडिपेंडेंट एबे बुझिला हां सर ठीक है हां एटा बुझी गली हां ठीक अछि थैंक यू आउ समिति ओके आउ सेमती एनी डाउट्स सर एक्चुअली मोर डाउट्स तो ना माने आपण तो पढेले पढा नै जस्ट मु गोटे जिंस जाने पय चाहतली आपण जेन कहतले 005 और 006 टा क्लियर करला परे हमें प्रैक्टिकल करि परिबा एक्चुअली सर मोर 005 टा क्लियर सर हमर प्रोजेक्ट यस हां एक्चुअली सर मोर पेपर 005 टा क्लियर होय छि किंतु 6 टा क्लियर हे नै दीटा को दरकार बोथ आर गोटा होची रिसर्च गोटा होची स्टैटिस्टिक्स रिसर्च करला माने स्टैटिस्टिक्स रो आवश्यकता अछि आमे जो ऑब्जेक्टिव रे लिखि देबा सॉरी हाइपोथेसिस लिखि दे देयर विल बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस कोठी करिया ताको भी डिफरेंट हायर स्टैटिस्टिक्स यूज करी टी टेस्ट आनवा देखि कि टाई स्क्वायर कोड कोन लागिवो यूज करिवा आ स्टैटिस्टिक्स विषय ज्ञान न थो सेहिति पई से कहचंती सेहि दीटा क्लियर थिले एइटा को आमे टच सर एक्चुअली मु वर्तमान सर एक्चुअली मु वर्तमान जो चारटा जिंस मोर डाउट थिला गोटे मोर थिला माने हमर जो सिनॉप्सिस लिखा होतला प्लस हमर प्रोजेक्ट ए दिना तरे बुझी गली प्रैक्टिकल टा आ गोटे रहउची हमर इंटर्नशिप सर आंको भी सर मु कोटा करि परिबे कोटा करि परिबे जो दीटा करि परिबे internship you can do everybody can do अच्छा but for this purpose we have some restriction प्रोजेक्ट पे रेस्ट्रिक्शन अछि हां ता पे रेस्ट्रिक्शन नै इंटर्नशिप पे पुनी ता विषय जदि आलोचना करे ता पे अलगा गाइडलाइन अछि देखियो आज केते समय पळुची न सर प्रैक्टिकल किंतु यार जो रहउथो प्रैक्टिकल भी करि होबना जति सेकंड ईयर कोन हां प्रैक्टिकल अछि आज भी गोटे प्रैक्टिकल नहीं सर प्रैक्टिकल सर मु जानिबा चाहतली कि मोर 00 जो स्टैटिस्टिक्स टा क्लियर है नी प्रैक्टिकल टा मु करि परिबि ना करि परिबि नै जोटा सब करि हबो एक्सेप्ट दिस आ व्यतीत सब करि हबो ना प्रोजेक्ट जो हां एटा हमें करि भी परिबा करि कि पाखरे रखितबा बट वी कैन नॉट सबमिट वी कैन नॉट इट शुड नॉट बी इवैल्यूएटेड एटा इवैल्यूएशन हे परिन से तो देखिबे से कागज दिता नै या सर हला सर थैंक एबे बुझियला हां सर थैंक यू तेणु आमे जेमिति करूथिले सिनॉप्सिस रे एठी भी एग्जैक्टली सही कथा आमे सेटा को एब्स्ट्रैक्ट को 250 रु 300 मो कथा ऑडिबल होउची त हां सर आज्ञा सर वेरी क्लियर सर ओके 250 रु 300 वर्ड भीतर एब्स्ट्रैक्ट लिखिबा जेते फाइनल आमे दबा प्रोजेक्ट को
आउ जहाँ इंट्रोडक्शन लिखिथिबा ताको टिके जो कहली वेरिएबल्स ऐड करके टिके अधिक लिखिबा लिटरेचर सेमिति अराउंड 15टा खंडे जोड़िबा आउ से लिटरेचर गुडाक शुड बी रिसेंट पास्ट 10 इयर्स भीतर हेतिबा दरकार एंकी 50 वर्ष तळर कोठी गूगल ले मिलला आणि कॉपी कर थई देले हबन वी हैव टू वर्क बिकॉज़ दैट्स व्हाई इट इज रिसर्च you have to search again and again to find a new things clear then rational the same thing the rationale for carrying out you have to justify that why you have taken this study you have already mentioned in project synopsis that should be written and some more points should be elaborated and the basic difference between the project proposal or synopsis and project is that synopsis ame jette bale lekhuche it is in future form ame ya koriba etiki sample noba ei anushthan noba all these things these are all the future form jette bale kamota kori saruche taku report writing re karuche it is should be in past form so report writing for project or dissertation work should be written in past form be clear बेले बेले मु बहुत प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करिया को मो पाकु आस्ता है लेखाय तो 10 टी सैंपल मु अमक कॉलेज टू नेबी आ करबो को दिन अब एटा देइछ कोन बुझ पाछो कि नहीं क्लियर आज्ञा सर सेटा फ्यूचर फॉर्मेट लेखा हबो कारण सेटा होची प्रपोजल हम जहा को दउचे सेटा मे बी एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड अब एटा हला फाइनल टा एक्सेप्टेड हेई गला परे हम ए काम कल क्लियर तेणु से सब दिनस यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स देन मेथोडोलॉजी रे जो सैंपल टूल कथा सेते लिखाय थला ए सैंपल एतिके टूल हमें यूज करिबु एते किंतु हमें सब कोन कले यूज कले वी शुड बी रिटन इन पास्ट फॉर्म एंड इन एलाबोरेट वन and the same process hypothesis should be there and prior to hypothesis there must be objectives then research design tools data analysis in data analysis you have to use some appropriate statistics and जेतेबेले डाटा टाको एनालिसिस करूचे कोठी मीन लागिवो कोठी स्टैंडर्ड डेविएशन लागिवो कोठी टाई स्क्वायर लागिवो कोठी टी टेस्ट लागिवो कोठी एनोवा लागिवो all these things it depends upon the sample size and the data what you have selected then results and discussion results discussion में कौन करिवा ना the finding of research after data analysis are reported in a tabular and graphic form सबु बेले टेबल जोटा रहिला ता तळको हमें ग्राफिकली ताकू लाइन ग्राफ हो बार डायग्राम रे हो कोन करिवा प्रेजेंट करिवा बेले बेले ग्राफ आगे होई जाइथो पिलांकर टेबल ता तळको थबो इमिति हेई परिबो नाही तापरे कंक्लूजन फाइनली हमें कंक्लूजन कोन ड्रा करले हमें जो रिसर्च टाइटल नैथिले हमें कोन ता देरु पाइले implication that is another part implication of the findings needs to be pointed out in this section many what is the practical implication of this study you have to mention then every study has its own limitation and delimitation it should be also mentioned and further research what you have done suppose you have taken 30 samples हमें ले परिबो फर्दर रिसर्च होची हमें लार्ज सैंपल आउट के नै थांते 60 70 नै कि हेई परिबो जेतो फर्दर रिसर्च मु करिवि कर परिबि एटा मु फर्दर करछि मु कोरापुट रे जाईकि भी कले कि होल ओडिसा रे कले आउट के भलो हबो फर्दर रिसर्च रे यू कैन टेक एज अ सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च देन ऑल दिस थिंग्स you have to mention in your reference and then bibliography. What is the difference between the references and the bibliography? Is there any differences?
किछि अछि बिबिलियोग्राफी तो होची सोर्स हम कोठो आनी छु तार लिस्ट ओके बुक हो कि आर्टिकल थ्रू भी हमें एक्सट्रैक्ट करू छे ओके गुड अटेम्प्ट एनी अदर चाउ गोटे कोन कहउतले रेफरेंसेस रेफरेंस सर बुझी होची एक्सप्रेस करियो नहीं आ जदी भी कोन उल्टा पल्टा कहू पुणी आपण धरिवे नहीं मु धरिबिनी आमे डिस्कशन ने अछि आज्ञा टीचर्स आर द गाइड फ्रेंड फिलोसोफर सब किछि एंड जो डिफरेंट नाम अछि इट शुड बी जस्टिफाइड मु एक्चुअली जानिया को चाहूची से जिनिसटा कोन सी एका ना दी भाई ना अलग अलग कि दादा पुओ बड़ा पुओ कोन सी एक्चुअली कोन व्हाट इज दैट माने काहे की कहूची आई हैव सीन मेनी रिसर्च project dissertation or thesis all these things and evaluated many synopses somebody has written bibliography and somebody has written references so that's why that is the question anybody any others people's learner please interact don't worry that your answer may be right or wrong others peoples are audible or not they are silent listener अन्य माने अछंती ना खाली जॉइन ही जाइछन्ती थोई देकी जाइछन्ती हेलो यस सर बिब्लियोग्राफी मीन्स मैंने ब्रॉड टर्म रे कहा होची जेमते कि वेबसाइट बुक्स yes जर्नल आर्टिकल्स एवरीथिंग very आउ good रेफरेंस टिके स्पेसिफिक very good so reference what you have told I appreciate your answer and attempt references is very specific but we have mentioned in our review of literature but bibliography is what you have taken that is relevant for your topic but we have not mentioned or we have not cited that is the basic difference reference means it is specific and we have referred and we have cited in our research work bibliography means it is relevant for our topic but we have not mentioned clear again अरे ऑनलाइन रे क्लास होउची किछि नले बड़ सारे गूगल सार तो अछन तांको पचार दो से दी चार धाड़ी कहि देबे असुविधा कोन रहउची सर मैं यस सॉरी सर सो आपण एत भलो कहउछे मो बहु बसिक सुनुछन गां को छुट्टी आछ त मो बहु सुनुछन हसुछन सुनि आपण मजा कथा थैंक यू नमस्कार आपण सर पढ़ा बहुत बढ़िया एक्चुअली इंटरेस्टिंग मोर आज नथिला पेपर हेले भी मु करूची कारण हमर जिनिस होउची एटा हमर आज जो थिला सिनॉप्सिस आ प्रोजेक्ट हमें ए जिनिसटा बुझिले नेक्स्ट स्टेप को जाई परबा एटा जदी क्लियरली बुझीबानी कारण ए जो टर्म गुडा को हमें जदी एनालिसिस करबेन लिटरेचर कोन आ जाई पान दुकान मागिबे आगे हम साइकोलॉजी करची लिटरेचर 4 टंगा दियो सी को सेडा कोन कोडी अछि ड्राइंग बुक माकु जो सो इट शुड बी क्लियर सेहित पई मु सब ए जो जिनिस सब कहूची बुझि पाछे हां आज्ञा सर हमर सबु जते बेले हमर सरी जीव कामटा हमें ताको सब चैप्टर वाइज रखिबा ए हमें भाबुतबा वर्तमान जो सिंगम 1 आइतला 2 3 9 सीए अलगा ई हमें कोन बीट बाय बीट जो तथ्य हमें सब रेडी करले ताकू रखिबा फास्ट रहला टाइटल पेज सर्टिफिकेट एक्नॉलेजमेंट टेबल ऑफ कंटेंट माने
तापर अब चैप्टर 1 होची इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 इज योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, चैप्टर 3 rationale of the study, chapter 4 methodology, and chapter 5 results and discussion, chapter 6 conclusion and implication, chapter 7 delimitation, limitation, further suggestion, references, appendices. Appendices रे कौन करिवा? Anybody has any reply in this context? Appendices रे कौन लिखिवा? ये देखिए रिसर्च किए करो करिकरी उत्तर कुह। सर अपेंडिक्स रे हम से दीटा दी तीन पेजेस खंडे आमे एक्स्ट्रा पेजेस ता दरे ऐड कर जाऊ जंती कि किछि ता दरे इन्फॉर्मेशन देथिबो हो ओके आई गॉट योर पॉइंट हो सुकांत तमरो कथा बुझिली आ अन्य माने पाखु जिबा से कहला दी तीनटा कागज जोड़ी दवा आ अदर इन्फॉर्मेशन ओके आ अन्य माने ये क्लास रे आ बसिले हबो कि इंटरेक्शन कले हम किछि कहबो ये ता बुधवार बही नुए चारि पाली पढी दे कि शेष पाली नडिया बाडै दे कि घर को नै पळे भाई ये से कथा नु सर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देबे कि हां एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ओके डाटा आउ टेबल देखिबा कार कोन आउ व्यूज अछि से जणे कहले जहां हमें सर रिसर्च करी थिबु ता रिलेटिंग हमें जहां भी माने इंफॉर्मेशन हमें गैदर करतु सेगडा हमें लिखि रखिबु माने सेगडा हमें मेंशन ओके गुड किंतु दुखर विषय जे यार उत्तर मु कहि साइला परे आपण माने भाबिए उत्तरटा इते सहज हमें जानिथिल यार अपेंडिक्स होची जो टूल हमें यूज करछे तार ब्लैंक शीटटा सेठी लागिवो वेरी सिंपल जहारी जो टूल ले हम डाटा कलेक्शन कले तार टूल रो ब्लैंक शीटटा फिलअप हेई नथिबो एडा लागी बुझेला इज इट ऑडिबल हां सर आगे सर एबे बुझि पाले एते सहज उत्तरटा सर सपोज 16 पीएफ हम यूज करछे सेटार ब्लैंक शीटटा सेठी लागियो पछपटे ता ऊपर हेडिंग रहबा अपेंडिक्स जे 16 पीएफ आ गोटे कोन स्टाइल यूज करछे ता तळे लेखाबा अपेंडिक्स हेटा 1 एटा 2 हैला अच्छा माने हम जो सर्वे और पे करी थिबु जा करिथिबा जो टूलटा नै कि सेटा तो फिलअप कर देइ छे डाटा जेतु नै एसे जोड़ा सारा में जो रॉ डाटा जोड़ा कहू छे हमें जो नहीं सेटा ब्लैंक फॉर्मेट ता से लास्ट को लागे अच्छा सेति पे या ना होची रिसर्च ता कले हमें कोन डिफिकल्टी सब होची जानिबा एटा खाली हमें सुनिले हमें जेतेबे प्रैक्टिकल ओटे नेक्स्ट क्लास गोटे एक्सरसाइज करके आसीबे समस्त पे टैक्स रहइबो जे हमें गोटे प्रपोजल धरि के आसीबा रिसर्च प्रपोजल कोन तार गाइडलाइन कहि देछि फर्स्ट रहइबो इंट्रोडक्शन तापर रहइला रिव्यू ऑफ लिटरेचर रैशनल तापरे मेथोडोलॉजी रहइला माने सैंपल टूल कोन नबो प्रपोजल तो कोन एटा 15 20 पेज भितरे हबो जणे खाली ब्रीफिंग करी जेजा कहि देले मु कहि देबी तार आउ कोन कोठी दरकार आउ हमें डिस्कशन ने बहुत जिंस ए तरे कोन हे जिवो प्रैक्टिस हे जिवो हमें जेतेबेले एक्सटर्नल पाखु को जिबा उफेस तो भाईबा हमें अधिया कहबा सी कम पचारिबे नले उल्टाटा हे जिवो सी अधिया पचारिबे हमें जेम झियो घर देखि आसला ले चुपचाप बसिया सेडू 0 मार्क देई से छाडी तेणु इट शुड बी वेरी क्लियर हमें जोटी न होची पचारिबा पचारले ही परिबे प्लागियरिज्म टोटली अवॉइडेबल हैला कि प्लागियरिज्म कोन बुझिले तो माने हमर मामू झुओ कका पुओ मौसा बा दादा अछंती इग्नोरे
कि बीची साहब को कि चिन्हा अछन से गोटे पोथी देले आमे ताठू ता नाटा काटिकी आम ना पकईकी रोल नंबर लिखि देई दे देले तापर सी धरा हेले सीए गले ताको जे देइथिले सीए भी गले सेटा होची रिसर्च जे चोरी करंती ताको ओडिया रे प्लागियरिज्म कहନ୍ତି इंग्लिश टर्म ता रिसर्च थेफ्ट हला तेणु रिसर्च होची सबले नुवा जिंस जानिबा आ नुवा नुवा टॉपिक नियो मु कहूची नुवा नुवा टॉपिक आमे नबा आमे ता विषय रे निहाती नुवा जिंस किछि पाई पाई ताले प्रोजेक्ट कोन आमे जाइले प्रोजेक्ट होची गोटे रिसर्च स्टडी where you need to collect data and complete in the form of dissertation सबमिट करबा जानले at regional center केमिति लिखिबा को लैंग्वेज रे इंग्लिश आ हिंदी हम मातृभाषा सेठी आउ किछि काम दबन केते पेज भीतर लिखिबा ऑल दिस थिंग्स हमें सब जानिले तेनु प्रथम कथा हला आमे गोटे प्रपोजल लिखिबा जेतु हमर नेक्स्ट रे गोटे क्लास रहउची आमे गोटे प्रपोजल लिखिकी धरिकी आस ता परे जाई कि आमे ता विषय डिस्कशन कर ए जो पॉइंट्स पूरा को रहिला आमे नेक्स्ट क्लास गोटे प्रपोजल हमको टैक्स दिया वाला आ भीतर कार कोन डाउट्स अछि मु कहि रिसर्च प्लागियरिज्म चलिबनी जे करिके आनिथिबो से जणा पड़ी जिवो यू नो बेटर टू मी तेन कार कोन डाउट्स अछि गोटे टैक्स हमें नेले वर्तमान जदी के इंस्टेंटली गोटे भाबुचंती कि कहा विषय गोटे रिसर्च हे परिबो नहीं रिसर्च के करिवेनी सुनी सुनी बोर हे गलेनी नै नै मु गोटे सर फिल्म करथिली एबिलिटीज ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन ऊपर एबिलिटी तकर वेरी गुड एटी हमें हां एटी हमें एटा चिंता करले सपोज तमे चिंता करले जे एबिलिटी ऊपर डिसेबल एटा ओटी ब्रॉड एरिया को एबिलिटी सोशल की कॉग्निटिव की फंक्शनल इट शुड बी क्लियर एटा हे गेले रिसर्च वर्क हे बुझियाला हम जति त काम को नै करबा त हमें फंक्शनल करि परिबो हां करि हबो ताक पे जहा टूल्स सब होउची डिसेबल पुनी दीटा एटा गोटे पार्ट गला डिसेबल चिल्ड्रन होउचंती आर पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 अनुसार 21 प्रकार डिसेबिलिटी पिला अछन को डिसेबल पिला नबा नले आमे ए बुलुथबा से 21 प्रकार हला को हमर जो 21 टा बैच इग्नोर पळैथिबे हमर रिसर्च सरी तेनु दैट शुड बी स्पेसिफाइड आमे आईडी नबा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बा एएसडी नबा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कि सीपी नबा कि एमआई नबा मेंटल इलनेस को कैटेगरी नबा कि लोकोमोटर डिसेबल नबा दैट शुड बी स्पेसिफाइड सेटा बोधे हेल्प होबो गोटे ब्रॉडर सेंस रु धीरे धीरे भीतर को हां सेति पई पे एटा हला ब्रॉडर एटा कहिला परे एति जिंस बर्तमान आसीला बुझियो आगे हां एटा ए जो जिनिसटा समस्त गटी रहया कथा ए जिंस भाबिले काई कि हमें ब्रॉड रु स्पेसिफिक आसीबा ताले रिसर्च होबा ए कोच पे डेप्थ एंड स्पेसिफिक नॉलेज आ रिसर्च रो वर्ड गुड सब बेले क्लियर प्रिसाइज अंडरस्टैंडेबल सब बेले जंक वर्ड रहबानी मेचे वर्ड रहबानी कि एआई सार मुठू आनिकरी मते देखैबो हला आमे निज भाषा रे परिष्कार करी लिखिबा ताहाले दैट इज कॉल्ड रिसर्च गुड थैंक यू आउ अन्य माने कोन चिंता करलनी बस के एति भितरे नहीं आई आउ सार रिसर्च करिया दीप जालिया पळिबा any other आमे प्रपोजल समस्त लिखि परिबा हां सर ट्राई करियो
Good. Try कले तो सक्सेस हो जे बिल्कुल ट्राई करबेन तार सक्सेस होबन कि फेल्युअर होबन किछ होबन आउ तार कोन डाउट्स अछि Sir, I have another question regarding Sure. new guideline. Regarding new guideline, psychology distance course is banned because you discussed before, but I late join, so properly I don't attend your conversation. So I want to know Okay. once again, new guideline psychology is banned from 2025 July. The student who is studying clinical psychology, how they will valid their this degree? Okay, you are from? IGNU. No, you are from which district, which area? Oh, Bhubaneswar, sir. Bhubaneswar. Hmm. Okay. So your admission batch is from 24 or 25? 24, 24. 24. Now you are going to complete, right? So Yes, new sir. guideline is effective for new learner, but till then it is not finalized. The barrier is they will be not allowed to work in the clinical setup. Apart from that, they can work as a academic setup. Clear? Now, Okay, till sir. now, we are all waiting for the final decision. It is not finalized, although there is a guideline come from UGC that those who have hold a degree in MS psychology from IGNO, they cannot work on further in the clinical setup. But it is not, they have also appealed from the IGNO side. It has not been finalized. We are all waiting for that. Okay, sir. So Thank you. okay, that is the query for your future, not for the courses. Okay, once you get the degree, it must be utilized because psychology is such a subject which can be utilized at any place, at anywhere, at any times. And nowadays, most of the people are suffering from mental illness. Prevalence is more. That's why the role of psychologist is important. And if there is one barrier that don't bother about this, because if you hold a degree, you can utilize at anywhere. But the knowledge regarding that must be expertise by you. That is most important. Thank you. Any other Thank you. query? Any other query? हेलो Yes. सर जदि मु एमती गोटे टॉपिक नेबी जेमती कि Yes. केयर गिवर कुहतु ऑफ स्पेशल चिल्ड्रेन या फिर Caregiver? डिजेबल चिल्ड्रेन हाँ Yes, डिजेबल yes. चिल्ड्रेन कर केयर गिवर जो माने अछंती तांकर इमोशनल स्टेट किबा मेंटल हेल्थ ऊपर जदि मु किछि टॉपिक नै कि रिसर्च करबी कोन कोन टॉपिक हे परिबो अच्छा इमोशन नहीं टॉपिक हे परियो माने आपण इमोशनल नेले इट्स ओके children with disability you have to specify No, all type of disability. uh, CP, ASD, that for caregiver. on that on that basis you have to search. So research topic it depends upon the literature. What is the literature? What are the earlier research has been done? You have to choose that. Then we'll discuss. Okay. Suppose ASD. So what is the emotional aspect of children with ASD? Is there any research? As No, you are I'm just. searching.
No. I am telling that do and Okay. search and come in the prepare in the next class. We will discuss what to do because research means always improvement. Don't worry that this thing has been done. We cannot do other thing. Any other doubts? सर आपण जोटा कहले नेक्स्ट क्लास रे गोटे प्रपोजल डिस्कस करिया को सेटा बेसिकली हम केते पेज रो लिखि के आनिबो हम हिसाब रे प्रपोजल टा आज्ञा प्रपोजल तो मैक्सिमम पेजेस हैला केते 1.5 टा बोधे 15 ରୁ 20 पेज हैला सर हमें आगे प्रपोजल आज्ञा प्रपोजल किंतु हमको कोन को गला आगे टॉपिक टा रेडी हे गले आगे टॉपिक टा चूज कर दवा टॉपिक वेरियस टॉपिक नै के आसी की कोन लिटरेचर मिलची हमें टोटली यदि करिया को चाहछे गोटे 15 20 पेज रो ब्लूप्रिंट धरि के आसीबा हेले हेई परिबो किछ असुविधा नै बुझी पाछन तो आज्ञा सर ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେତେ ଉତ୍ତର ମିଳିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ସर ଖାଲି ସର୍ଜିଓ ପଟ କିନି ଆଉ କଣ ଯଦି କହିବା ବୁଝି ଗଲେ ବଢିଆ गुड sample कोन टूल कोन रिव्यू ऑफ लिटरेचर कोन कारण these are so all these things are new for you जेतु एगुला फर्स्ट ईयर रे हमरो नथिला थिला की ना ओते नथिला तेनु रिसर्च वर्क करिया पई हमकु के प्रिपेयर हबा पड़िबो हमकु साइड देखिया पड़िबो बहुत जर्नल मैगजीन सर्च करिया पड़िबो ताहाले हमें करी परिबा सिनॉप्सिस टा केते दिन जाय वैलिड रहइबो अप्रूवल हैला हम सिनॉप्सिस अप्रूव हे गले घर नै ताऊ रखि देले तापर डिग्री मिलि जो when what is the validity period जणा अछि कि once the synopsis is approved your synopsis will be valid till the validity if you are on the basis of your admission validity जे पर्यंत अछि से पर्यंत रहिबो माने 3 वर्ष जा थिबो now just few minutes I have to discuss how your synopsis is being evaluated your synopsis is to be evaluated as per the format for synopsis evaluation given in the handbook what format this सेही अनुसार गाइड मार्क करी करी जाई के अप्रूव की नॉट अप्रूव लिखो क्लियर then the evaluator will ensure that you have prepared your synopsis on the basis in the sequence of your introduction, review of literature, rationale, methodology,
that includes objectives, hypothesis, operational definitions, sample tools, all these things. Reference. Since it is a master degree course, the topic should not be very elementary or +2 level or at graduation level. It should be relevant and specific and high standard. And another important thing is selection of the topic of the further synopsis must involves both quantitative and qualitative. What is qualitative approach and quantitative approach? Anybody has any idea? Quantitative means you use the statistics and use show the results. That is the quantitative. But qualitative things, what is that? What is the opinion? That is most important. From the quantity, what is the quality is behind it? Quality रे हमें mental state of mind, yes, emotions yes, all these things. Suppose stress level of walking, those who are walking, stress level high. It is statistically high. It is okay. But what you are telling, why it is high? What is the cause behind it? You have to mention. That is the qualitative approach. Now, every research is mixed one, not only quantitative but also qualitative. Clear? Yes, sir. So, research must be quality and quantity. ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା quantity ସହିତ quality ବି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ weightage ରହିବ. Then we can go for higher studies. ଯେତେବେଳେ MPhil, PhD, delete all these things we will do, it will be much more helpful. The research needs to be conducted with every primary data, not the borrowed one. The study should not be on secondary data. It should not focus on the finding of any incident, awareness, all these things. So go for first-hand knowledge or primary data. That is very much important. And again, I am repeating, the title should reflect important variables. जो variables कथा प्रश्न करथलो कहि सेटा टाइटल रिफ्लेक्ट होती. टाइटल रे जणा पड़िबा देरे कोन variables अछि. Without variables research हे परिबो नाही. सेगुडा एगुडा तो से जे evaluator, they also will check for your approval. Objective and hypothesis should not be framed appropriately. Appropriately हबनी. आमे रिसर्च करछ ने एक्जेक्टली ऑब्जेक्टिव आमे कोन फिक्स एया स्टडी करिया को चाहू. बहुत वुमेन अछंती किंतु आमे नबा को चाहूछु 50 रु 60 एज रो वुमेन. Yes, this is the criteria. This is the exclusion criteria. What is the inclusion criteria? It should be clearly mentioned. And the technique for data analysis needs to be mentioned. Evaluation consists of 3 categories. While you are submitting a proposal or project, it is belongs to 3 categories: approved with modification, and not approved. Approved refers to when your synopsis is appropriate. When everything is fine, you will get that your synopsis is approved. You can go forward for your next research work or final project dissertation. Not approved indicates that synopsis is not proper and requires major changes. यदि बहुत किछि हमरो changes दरकार, टाइटल ठीक नाही, रिसर्च डिजाइन ठीक नाही, ऑब्जेक्टिव भूलभाल लिखिছে, all these things, then it will be not approved. Where the major changes are required. Approved with modification means
that synopsis is approved with minor changes. Approved with modification means so little modification is required for all these things. You can change and go for next. That means incorporate the modification and go for the final dissertation. Clear? So when you will submit the synopsis, your result will come in 3 categories. Approved with modification, it is better, and the best one is approved, without and not approved is not within 2 categories. So I think when you will prepare the proposal, it should be best one, and in first time, in the first submission, it will be approved. If you have any queries regarding that, you can go for the IGNOU sites regarding that. So I hope you must have understood all these things regarding the how to write, how to prepare the synopsis and the final project submission. ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ସିନୋପ୍ସିସ୍ ଆମେ ଏବେ ଲେଖିପାରିବା କିଛି ବୁଝିଲେ କିଛି ବୁଝିଲେନି ଭୋକ ହେଲାଣି ନା କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଓରେଡି କାରଣ ଏଠି ଯାହା ପଢିଲେ ସି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ପଢିବା ନା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା କୁଆଡେ ଗଲେଣି ଆଉ କଣ କିଛି ଡାଉଟ୍स आउरी हम पाखरे समय अछि 10 मिनिट हमें चाहिले डिस्कशन करि परिबा दैट विल बी बेटर हमें टैक्स नेले जे नेक्स्ट क्लास को गोटे नेका प्रपोजल करिबा प्रपोजल सहित आसीबा डिस्कशन करिया को ता परे भी एमपीसी 15 रे जदि भी किछि कोर्स डाउट्स थिबो जोटा इंटर्नशिप एटा सार नेबे अभय सार हैला मोर एमपीसी 15 और 16 थिला मु 16 टा को पढाई देली कारण एटा टिके बुझिबा जिंस बेसी तेणु एटा सरी गले हम भी करि परिबा कारण रिसर्च वर्क होची इंपोर्टेंट जदि कार किछि डाउट्स थिबो पिले माने करो ना कार किछि डाउट नहीं सर काउंसलिंग साइकोलॉजी रो जो क्लासेस गोडा हबो आगु को ओटे तो क्लिनिकल साइकोलॉजी रो चाली छी हां किंतु एटा तो कॉमन जो ना ना कॉमन सर कुआ ही नहीं हमको मु आज जाइथिली बढ़िया नहीं नहीं मु विदाउट इनविटेशन आज जाइथिली अच्छा से सर हमरो माने काउंसलिंग पिलांकर भी हबो आगु को क्लास अच्छा एटा खाली क्लिनिकल साइकोलॉजी वालांकर थिला अच्छा तो इंटर्नशिप सर तांकर भी माने हमरो भी रहिबो इंटर्नशिप एंड ए जो आपन को क्लास गोडा तो सेगडा तो सर इंटर्नशिप आपन ही नेबे कथा आगु को इंटर्नशिप देखबा कोन होची मु नै पारे न अभिलाषा नेबे जीएल नबु सेमानकर एक्चुअली इग्नोर तांकर शेड्यूल बना चाली छी एई वीक नै से माने देई चंती एटा बेसिकली काउंसलिंग रा हमरो दीटा क्लास रखि चंती बाकी क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन सब बंटा ही छी अच्छा एई क्लास बडा हमरो पुनी रहिबो आगु को अच्छा गुड मैं आगु जानि गलो हां पिल्ला तो भी हमरो क्लास रे बेसी नांती आउ किछि एनी डाउट्स तृप्ति ग्लोरिया गीतांजलि सुकांत कुआड कटि गले बदे सर सुनु सर
ଶୁଣୁଛ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ତ ମିସ୍ କରିବେନି ସାର୍। ଓକେ थैंक यू ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍स ଅଛି କି ତୃପ୍ତି No, sir. Thank you, sir. can you prepare a proposal for the coming class Yes, କାରଣ sir. ଆମର ମୋର ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ବାକି ନାହିଁ ଦୀପାବଳିରେ ଯଦିଓ ବାକି କଲେକ୍ସନ ହୁଏ ଆମର ବାକି ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ କଣ ବୁଝିକି ଆଇଲେ ତାପରେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଚଳିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟିଆ ଖାଲି ପଢିଲେ କିଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଟା କରିବା ଇଟ ମେ बी right or wrong don't worry about the result ସବୁବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ନଉଛେ ସେଟା ରାଇଟ୍ ହବ କି ରଙ୍ଗ ହବ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି नो ଯଦି ନହେଲା ଆମେ ନଉଛେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଯଦି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ନେଇଛେ ନଲ ନଉଛେ ନାଇଁ କି ଗ୍ଲୋରିଆର କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ନାହିଁ ଆଉ କି ଅଛି ଗୀତାଞ୍ଜଳିର ନାହିଁ मोर तो सर बोधे प्रोजेक्ट ही नहीं प्रोजेक्ट नहीं माने जो माने अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी नहीं जंदी से माने चूज करिवे आइदर प्रोजेक्ट नेबे नने अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी नेबे अच्छा तब 100 तो मार्क्स जोटा बुझी गले तो कर देबे बढ़िया तो से अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी मोर रहइबो मोर प्रोजेक्ट नाही मु सेहीटा कंफ्यूजन सर होउतला एक्चुअली किंतु जा असुविधा नाही गोटे नुवा जिंस जानिली सिखिली हां एटा किंतु फ्यूचर कामरा आसीबो रिसर्च निहाती रिसर्च गोटे एमितिया जिनिस तार किछि लिमिटेशन नाही आ रिसर्च रो प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन होची बहुत आगे आमे जेतेबेले हायर स्टडीज करिवा एमए साइकोलॉजी इग्नोर करू बा जोठी करू तापरे गले हायर स्टडीज पीएचडी करिया गले सेठी एई कथा ही करिया की पड़िबो हां तेणु आमे जेते जानिबा एटा एक्चुअली आमे एई करिकुलम भितरे कन्फाइंड हेले हबनी हमकु टिके रिसर्च करिया पड़िबो नुवा जिंस जानिया पड़िबो आमे साइड खोलले बहुत जिंस भी जाना पड़िबो जेमति मु कहली बुक्स जर्नल मैगजीन आर्टिकल एटा सर्च कले हमर आज थियोरेटिकली आमे बुझिले कारण एटा आमे थियोरेटिकली वर्तमान गोटे ब्लूप्रिंट पाई गले जे केमिति कोन करिवा वर्तमान प्रैक्टिकली देखिबा ये जो लिटरेचर खोजिले जना जीवो आर्टिकल देखिले जना जीवो जे पूर्व लोक माने केमिति कोन करिसेंती टाइटल ता कोन नेथिले ताको इंट्रोडक्शन ता रे कोन लिखिसेंती ताको लिटरेचर रे से कोन दैछेंती तेनु आमे जो जिनिस नबा सेटा स्पेसिफिक हेतिबो हम से अनुसार कोन लिखिया पड़िबो वेरी सिंपल आधर किछि असुविधा नाही आमे चाहिले आमे करि पाइबो आमे न चाहिले कहि पारे नाही तेणु साइकोलॉजिस्ट मध्य इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज अदर बट इट इज वेरी इजीएस्ट टू चेंज ओन सेल्फ कारण आम पई आमे बोर्ड यूनिवर्सिटी काउंसिल सब नेटा क्वाइट इंटरेस्टिंग मोर सर 2007 रे मु एमफिल करथिली ज्योग्राफी रे अच्छा जियोग्राफी हां मु जियोग्राफी सब्जेक्ट करी छी थ्रू एमफिल करली देन मु फिल्म स्टडीज रे भी मास्टर्स करली बट जेते अच्छा एमफिल करली सेतेला मु इको टूरिज्म ऊपर करथिली सिमिलीपाल नेशनल पार्क ऊपर अच्छा सेते बेले भी माने लॉन्ग बैक 2007 मोर थिला तो एबे मु आपण अच्छा पढेला बेलको मु से पछरे भाबुथली बहुत गोटे जिंस हमर मने पडुतिला अच्छा किंतु बहुत इंटरेस्टिंग सेटा पूरा लॉन्ग टर्म मेमोरी अछि आ एलटीएम हां को पळै छी आ बैक पळै छी बहुत भूली जाई छी टिके टिके किंतु मु गोटे जिंस सर देखिली आज जोडा आपण पढेले नि मु जते रिसर्च मेथोडोलॉजी परीक्षाटा देबी मते हेल्प करिवो सेगडा ओके हाँ कारण आमे सेइपई मु कहे प्रैक्टिकल जिंस गुडा जानले थियोरेटिकल नॉलेज को आमे इनकलकेट करि परिबा इजीली हां कारण हां ए जिंसटा बुझिले तापरे सेइटा थियोरेटिकली अछि आउ किछि हां नै हां कारण एटा होछ बुझिबा पाठ नहीं सत कथा कहीं ना इग्नोर आम तो सब जाक क्लास करिया को पाउनु साइकोलॉजी रो अच्छा तो एक्चुअली साइकोलॉजी जदी यूनिवर्सिटी रे आपण प्रॉपर वे रे करिवे ताल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुए अच्छा हमें चेष्टा करिवा कारण बही रे पाठ तो अछि बट हाउ वी आर प्रेजेंटिंग दिस दैट इज इंपोर्टेंट हां हां आउ कार किछि अछि ना क्लोज करिवा
Sir, thank you so much, sir. Thank you Thank to you. Thank you, all, sir. and Thank you, sir. wish Happy you Diwali. happy Diwali and happy Kali Puja. And Mhm. hope Thank you, sir. you will learn something in my class, and we will see you in the next week. And please go through the handbook and what we have discussed today. Please come prepare with a small proposal. We'll discuss it, and I hope we will find a solution. Hopefully, thanks to all. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Thank you, sir. sir.